हेलो बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? हम लोग कैलकुलस पढ़ चुके हैं, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स सीख रहे हैं, जिसके बाद हम धुआंधार फिज़िक्स पर अप्लाई करके उनको फिज़िक्स पर कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, और बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। लेकिन उससे पहले बेटा फटाफट एक इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो हम लोग ग्रेविटेशन में करेंगे वो एक बार कर लेते हैं, तो तुम लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इंटीग्रेशन इस तरह से यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन हम लोग ग्रेविटेशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो चलो एक बार हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके वर्क डन कैलकुलेट करें, क्योंकि हम इसे पहले सीख चुके हैं, राइट। तो चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ। वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? Formula which tells us that work is equal to force into displacement into cos theta, where theta is angle between force and displacement, right? Now take this example. This is surface of earth and this is center of earth, right? And an object is placed at some height which is having distance from the center of earth r2. Mass of this object is m. So are you getting what is the situation? That a mass is placed at distance r2, position r2 from the center of earth. Now, if you leave this mass from this place, what will happen? It will start falling down because of gravitational force, right? It's true. When we were asked this question in class 7th or in class 9th or even in class 10th, what was the answer? Force into displacement, if it falls by a height h down, then m into g is force, h is the displacement, and since mg is acting downward and body is displaced also downward, so what we say? That work done is mg into h into cos 0, right? That is mgh was the work done by the gravity. But now we have to understand one more thing, that g is not constant for all the values of height. Just remember the chapter in which you have studied that if we move up from the surface of the earth, gravitational acceleration or gravity decreases, right? So let me first give you an idea that up to 10 kilometers height approximately, we take g to be constant. That is 9.8 meter per second square. In detail, we will go through it in the chapter gravitation. But above 10 kilometers, we cannot take, it's not a boundary beta. It's approximately up to 10 kilometer. We take the g to be approximately constant. But above this value, we have to consider the height of the object, because now the g is no longer constant, it decreases, and we have to consider its effective value. So effective value of g and also the fact that force of gravity or g changes with the distance of the mass from the center of the earth
makes the problem of work done by gravity a little complicated, as we have done in the case of work done by the spring. So let me start with the very first point, that if a mass is at distance r2 from the center of the earth, then what is actually the force between the mass and the earth? If you take mass of the earth to be me, if you take radius of the earth to be re, and this is the mass, then force between this mass and earth is universal gravitational constant G, m of earth, mass of object upon distance square between these two. You have learned this formula earlier. You are familiar with it, right? This is the formula, and we can see that force changes with the distance between the two masses. So if we have to calculate work done when mass from position R2 falls to position R1, this is the position R1. If we have to calculate work done by gravity during this displacement, then we have to use integration, because continuously the force is decreasing or increasing according to r. Like in this case, force is increasing. So we cannot calculate force into displacement into cos theta. We cannot calculate work done by directly using this formula. So what we are supposed to do? First, from journey of mass m from this position to this position, just observe it in slow motion. A very high definition camera, say, is used to observe the motion of the mass from position R2 to position R1. And we freeze the position at, say, position R, right? We freeze the mass position at point R here. And at this point, let me see what is the force between the mass and the earth. So the force between mass and the earth will be this one. At position R from the center of the earth, we were going through the motion in slow motion. We were observing at each point that, okay, force at this point is this one, force at this point is this one, force at this point is this one. And then we freezed the motion at this point in camera, and we have written the force of earth on mass m at position R. This is position R. And that value at position R will be Gmem upon R square. Then we said that as the mass comes down, its force changes. But if we displace this mass by a very small element dr, very small displacement, such a small displacement that we can take the force of gravity to be this much during this very small, infinitely small displacement dr. So during this small displacement, what should be the work done by the gravity? The work done by the gravity should be force of gravity into displacement, which is dr, into cosine of angle between force of gravity and dr.
Force of gravity I am writing as Fg. So force of gravity is this much, displacement is dr, and we can easily observe that force and displacement are in same direction, so angle between them is 0. So work done dW, see dW in this very small displacement is this much. Alright, but if we want to calculate the work done not for only dr, for position R2 to position R1, then we have to calculate this type of small work done at every point for a small displacement dr, and then after breaking the whole journey in small dr displacements, we have to calculate work done for all small displacements, and then we have to add them, and then we will be able to find the whole work done. And that is what is integration. We have very well know this concept, that this is the integration. Actually, maths has given us this concept that we can directly use the integration and we can get the summation of the work done, which is calculated for very small displacements by breaking the whole long journey into small displacements, right? So what we did, whatever dW we have calculated, we will integrate it from the position where mass started falling to the position where finally it reached. So integral dW can be written as force into dr, as cos 0 here is 1. So we have written, okay, work done is integral force dr, and now see G, M, E, M, they are constant. They can be placed out of the integration. So we have taken these three constant terms out of the integration. And now we can easily see that inside the integration we are left with R2, R1, 1 upon R square dr. Alright. GMEM and 1 upon R square can be written as R to the power minus 2. See? And then integration x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1. So finally we are left with these three terms which are constant and minus 1 upon r, the result of integration of 1 upon r square. It's better you learn it. You will use it so much that automatically it will be remembered to you. It will be feeded in your memory. So minus 1 upon r and r2 to r1. Now substitute the upper limit and the lower limit one by one. GMEM, upper limit 1 upon r1, so it will be minus 1 upon r1, then you have to put a minus, then again minus 1 upon r2, so minus 1 upon r2 will become plus 1 upon r2. So when we will substitute the upper and lower limit, we will have in hand 1 upon r2 minus 1 upon r1. This is work done by the gravity when a mass moves from position r1, from position r2 to position r1 in the field of gravity. So have you got an idea that how we are going to use integration in so many important concepts? Now come to the binomial theorem. Binomial theorem is actually a very good theorem which
makes our calculation simple, right? So let me see that binomial theorem is actually the part of algebra. I have gone through the concept of equation in algebra. What is equation? Equation is relation between two variables. Like, you know that if distance of a body changes with time, and say a body just doubles its distance moved every minute. In first minute it moves 2 units, and in second minute it moves 2 into 2 4 units. So we will say that distance of that body is related with time as the equation this. Any any variable y can be related to any other variable x through a equation, and it just tells you that how y changes with x. X will be known as known variable, you can say, or you can say independent variable, because first x will change, then the y value will change. Or you can say the variable which changes its value first is known as independent variable, and the variable which changes its value as a result of this is known as dependent variable. In the same way, in spring force, you came to know that a spring force depends upon extension according to relation this, where K is known as spring constant. Now, two types of equations we will deal frequently. We will deal with the two types of equations. One is linear equation, right? And the other is quadratic equation. Quadratic equation in which variables highest power is 2. For example, in this equation, h is equal to ut plus half at square, where height is changing with time according to this equation, and the variable time has its power 2. So this is a quadratic equation. You know it. I'm just helping you to recall the things. Now, what is the speciality of quadratic equation? You throw a ball up. The ball will go up, will have a zero velocity for a movement at the highest point, and then will return, right? Now ball will pass through same height in this journey 2 times. That means at t1 time, if the ball is at height h, then after a certain interval at time t2 it will again be at height h. And if you know that if you solve this equation, then you will have two values of t, and those two values actually correspond to t1 and t2, because for t1 also ball is at height h, and for t2 also ball is at height h. So quadratic equation has two solutions or two values of a variable. Now, what is the few important points which we need to know in quadratic equation? That standard form of quadratic equation is this: a number x square plus another number x plus another number c is equal to 0. And if it is quadratic equation, then a cannot be 0, otherwise the equation will be transformed into linear equation, right? So in quadratic equation, if you want to know that for what values of x this equation will sum to be 0, or in other language we say that find the values of x for which this equation is true. So you already have gone through it
in class 10 that we get the solution of x or the value of x using this formula. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Right? And if b square minus 4ac, if this is 0, then you will have x as minus b upon 2a. And since x should have two values, so both the values will be equal to minus b upon 2a. But if b square minus 4ac is not a 0, then you will have one value of x as minus b plus under root this upon 2a, and the other value of x will be minus b minus this value upon 2a. That is, x1 and x2 will be two different values, one with plus and other with minus. These are basic things which you should know or you should recall, because we are going to deal with equations in every other numerical, right? So, and one more information you must remember, many of you must remember, that x1 into x2, x1 is minus b plus this value upon 2a, x2 is minus b minus this value upon 2a, and if you multiply them, then automatically you will be left with c by a. And if you add them, x1 plus x2, then this will get cancelled and automatically you will be left with b by a, right? So this also, if you remember, it will be easy for you to solve the problem in lesser time, right? Now, if b square minus 4ac is a negative value, then under root negative value is an imaginary number, and that means that then equation cannot be solved. In reality, that situation is not possible. When b square minus 4ac is a negative value, then that situation is not possible in reality, because the value of x will become imaginary number. Now come to the part of algebra. This was the part of algebra which you already know. I am just giving you the notes so that you recall what you have already learned, right? Notes are very important in class 11th and 12th. Very important. Just believe me, I am taking the classes 11th, 12th, 10th from last 22 years, beta. I can assure you that you must have your notes intact for the last few months preparation. Now, the other few points. Right? So this was algebra, general algebra, which you have gone through. Now let me come to binomial theorem. Binomial means what? An expression which has two terms. Bi means two. And any expression which has two terms is called binomial expression, like x plus y whole square, x plus y whole cube, x plus y to the power n. All these are binomial terms, binomial expressions. Now what binomial theorem says, that this y plus x
to the power n can be extended as nc0, n choose 0, x to the power 0, y to the power n plus nc1, x to the power 1, y to the power n minus 1 plus n choose 2, x to the power 2, y to the power n minus 2 plus and so on. अब डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके पूरी बात समझा रही हूँ तुमको। ऐसे समझो कि मैथमेटिक्स में तुमको ये हेल्प दी गई कि भैया y प्लस एक्स टू द पावर अगर n ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ये जो x है ना, एक वेरिएबल उनमें से वो ऐसे चलेगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, फिर x की पावर 3 एंड सो ऑन। दूसरा टर्म वेरिएबल जो बचेगा वो कैसे चलेगा? y की पावर n, y की पावर n माइनस 1, y की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। मतलब एक की पावर एक एक बढ़ती जाएगी 0 से और दूसरी की पावर n से शुरू होगी इस टर्म से और एक एक घटती जाएगी। और ये n चूज 0, nc0, nc1, nc2 ये क्या है? ये भी मैथमेटिक्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है। ये क्या है? अगर आपको जनरल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये जो NCR है, मतलब जो N चूज R, ये N के बाद ये N और R है, इसको ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। एक बार इसका इस्तेमाल हुआ, एक बार इसका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद n माइनस R। अब ये फैक्टोरियल क्या है? किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाइनोमियल थ्योरम में बस यही 2-3 पॉइंट्स तुमको जानने हैं और इस्तेमाल करते समय तुम्हें मैथ्स की तरह इतना इस्तेमाल ही नहीं करना है, तुम्हें तो बहुत इजी यूज़ उसके होने हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ लो तुम, बड़ी सिंपल सी बात है, मज़ेदार चीज़ है। देखो, मान लो मैंने लिखा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 पता है क्या होगा? 3 से शुरू करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, बस। अगर कोई कहे फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 5 इंटू 4, एक एक कम करते जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी अगर कोई कहे फैक्टोरियल n, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? उसी नंबर से, जैसे 5 जैसे 3 वैसे n। अब उसके बाद एक कम करो, n माइनस 1, फिर एक कम करो, n माइनस 2, फिर एक कम करो, n माइनस 3, और ये करते 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 कहाँ तक पहुँचोगे? फिर लास्ट में तुमको 1 तक ही पहुँचना है। देख रहे हो कैसे टर्म्स निकल रहे हैं? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। और कब तक चलना है तुमको? जब तक 1 ना आ जाए। तो मल्टीप्लाई करते गए n इंटू n माइनस 1 इंटू एक एक कम करते गए, कम करते करते एक दिन हम, मतलब एक दिन नहीं, कम करते करते हम एक टाइम आएगा कि 3 पर पहुंचेंगे, फिर 2 पर पहुंचेंगे, फिर 1 पे पहुंचेंगे। ये है फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जब उन्होंने कहा बाइनोमियल थ्योरम में, जब उन्होंने कहा कि भैया बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, तो अब फिज़िक्स में हमको बहुत ही आसान पार्ट की ज़रूरत है। ध्यान से देखना, ये जो NCR है वो इस तरह से एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो हम एक एक करके ये NC0, NC1, NC2 को ज़रा देखें क्या आता है। तो NC0 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल 0, फिर फैक्टोरियल n माइनस 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ये सब चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेंगी।
फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n यानी 1, NC1। ये देख लो भाई, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n-1 क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1 तो 1 ही रहा। फैक्टोरियल n-1 को तुम कैसे लिखोगे? देखो n को कैसे लिखोगे? n-1 और एक एक कम करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? 2 इंटू 1 तक। इसको हम n-1 से शुरू करेंगे और फिर 2 इंटू 1 तक पहुँचेंगे। तो देखो ये सारे टर्म्स तो गए, ये टर्म्स ऊपर और नीचे चले गए, तो बचा क्या? n। तो मुश्किल है कहीं? जो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है वो अगर ना भी समझ आए, क्योंकि बायो वाले बच्चे तो ये और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर ना भी समझ में आए तो अभी तुम देखना कि लास्ट में कितनी छोटी सी एक्सप्रेशन बचेगी, बस तुमको उतना ही याद करना है। ये डिटेल हम बता रहे हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो जो लास्ट की डिटेलिंग, जो लास्ट का एक्सप्रेशन बचा है जिसको तुम्हें इस्तेमाल करना है, उसको तुम्हें लर्न करना है, बायो वाले बच्चों को भी। ठीक है, अब NC2 को देखो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n-2। n को n-1, n-2 एक एक कम करते करते 1 तक पहुँचे, इधर n-2 को n-2 से स्टार्ट किया, 1 तक पहुँचे, और फैक्टोरियल 2 को भी ऐसे ही लिखा रहने दो। हालांकि फैक्टोरियल 2 को अगर एक्सपेंड करो तो क्या होगा? 2 इंटू 1, सिंपल। अब देखो n-1, n-2 ये सब है, इसमें से इतना हिस्सा तो नीचे का ऊपर का चला गया, तो क्या बचा? n-1 फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब हमने जब फैक्टोरियल टर्म्स को निकाल लिया तो हमने इस एक्सप्रेशन को जो बाइनोमियल थ्योरम ने हमको दी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा। कैसे लिखा? देखो, y प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू, देखो हमें कहाँ से शुरू करना था। अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम इसको लिखना ऐसे सीखो, जैसे मैंने कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखा था, तो मैंने कैसे सीखा था कि y प्लस एक्स टू द पावर n है। ठीक है, तो मैं क्या करती थी? मैं शुरू करती थी x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, लिख लिया। आगे के टर्म्स ऐसे ही चलेंगे। फिर y शुरू किया, y की पावर n, y की पावर n-1, y की पावर n-2। अब बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, और इधर NC0, याद करो NC0 क्या आया था? NC0 आया था 1, तो मैंने लिखा NC0 1। फिर NC1 क्या आया था? NC1 आया था n। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या था? NC0 जिसकी वैल्यू आई 1। यहाँ पर क्या था? NC1। अब देखो NC0 से शुरू करें, अब ऊपर n ही रहेगा, नीचे एक एक बढ़ता जा रहा है। NC1 तो ये कितना आया? सिर्फ n बचा था। फिर NC2 ये कितना आएगा? n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसके बाद अगर मैं पूछूं तो बता पाओगे? इसके बाद यहाँ पे NC क्या आएगा? 3, x की पावर 1 बढ़कर क्यूब, y की पावर 1 कम होकर n-3। तो इस तरीके से लिखोगे तो लिखना आसान होगा। देखो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कैसे शुरू किया था? x की पावर 0, 1, 2 लिखते चले गए, y की पावर n से शुरू किया, y की पावर n, y की पावर n-1, y की पावर n-2 एंड सो ऑन। यहाँ पर NC और ये 0 से शुरू होगा, NC0, फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे, NC1, फिर NC2 एंड सो ऑन। पर हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है। NC0 1 होता है, कैलकुलेट कर लिया, NC1 n होता है, कैलकुलेट कर लिया, NC2 n, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2,
इधर x एक एक बढ़ रहा, इधर y एक एक कम हो रहा। सिंपल, बिल्कुल क्लियर। जैसे कहा है वैसे लिख कर 2-3 बार देख लो, तुम्हें पूरा एक्सपेंशन अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में कितनी ज़रूरत है देखो। अब हम फिजिक्स के पार्ट पर आते हैं। देखो, जब x बहुत छोटा हो, हमें जो प्रॉब्लम मिलेंगी वो ऐसी ही मिलने वाली है फिजिक्स में। जब ये x बहुत 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 छोटा हो, तुम मान लो कि x की वैल्यू ले लो, मान लो 0.001, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.0000001। 0.001 इंटू 0.001 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगेगा। यानी अगर x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमारा काम यहाँ आया कि अगर x बहुत छोटा है तो x की वैल्यू पहली तो 1 है, x की पावर 0, दूसरी x की पावर 1 है। लेकिन अगर x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर और भी छोटा हो गया, x क्यूब तो और ज़्यादा छोटा। तो बाइनोमियल थ्योरम में अगर x बहुत छोटा हो तो हम क्या कहते हैं कि हम अगर x की हायर वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें तो भी जो रिजल्ट सम करके आने वाला था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बात समझ आ रही है बेटा? मतलब अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम पहले 2 टर्म्स रख कर ये सारे टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। ये है बाइनोमियल थ्योरम का वो पार्ट जो हमारे कैलकुलेशन को आसान कर देता है। तो हमारे पास बचता क्या है? y टू द पावर n, n x और y टू द पावर n-1। अभी और आसान होगा। कैसे? हमें जितने केसेस मिलेंगे उसमें हम एक्चुअली इस y को कॉमन ले लेंगे। जब y को आप कॉमन ले लोगे तो y प्लस एक्स टू द पावर n में से y को कॉमन ले लो, तो इसमें से y को कॉमन लेने पर y बाहर आएगा n की पावर के साथ और अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। अब कंडीशन ये है कि x y से बहुत बहुत छोटा हो। क्या है कंडीशन? कि x y से बहुत छोटा हो। x तो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू 0, 0 नहीं हो गया, इतना छोटा हो कि बहुत छोटा हो। और वो y से बहुत छोटा अगर हो तो x अपॉन वाई 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें जो मेन की यूज़ करनी है वो क्या कि भाई x बहुत छोटा है तो x की हायर पावर्स को इग्नोर कर देना है। और अगर x की हायर पावर को इग्नोर कर देना है और y की वैल्यू को भी तुम 1 ले लो, क्योंकि प्रैक्टिकली जो फिज़िक्स में केसेस आने वाले हैं वो 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाले हैं। तो हम ज़बरदस्ती y को क्यों लेकर आगे चले? तो हमने कहा कि y की वैल्यू 1, ये देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर x अपॉन वाई, और अगर y 1 हो और x बहुत छोटा हो तो आपको क्या बचेगा? y 1 हो गया और x बहुत छोटा है, हायर पावर इग्नोर कर दी, तो तुम्हारे पास तो 1 प्लस एन एक्स ही बचेगा। देखो, तो हमने अपने फिजिक्स के लिए क्या फाइनली एक्सप्रेशन निकाला कि 1 प्लस एक्स अगर 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है और उसकी पावर है n, जिसमें x 1 से बहुत छोटा है, तो ये टर्म
सिंपली इसका अगर आप पावर निकालें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप बाइनोमियल थ्योरम के इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कर लें तो ये टर्म सिंपली तुम्हारे सामने बचता है 1 + nx। अब n चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो बाइनोमियल थ्योरम में ये रहा वो पॉइंट जो हमें याद करना है, और ये कंडीशन क्या है कि x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, x इज़ मच लेस देन 1, देन binomial theorem says that 1 + x to the power n is approximately 1 + nx, और अगर x बहुत छोटा है तो 1 + nx को कैलकुलेट करें तो वो रिजल्ट एक्चुअल जो आना चाहिए लगभग उसके बराबर होता है, और हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सही रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन हमको गलतियां नहीं कराएगा। तो अब मैं सारे नोट्स तुम्हारे सामने रख रही हूँ, आराम से इनको पढ़ते हुए कॉपी कर लो। और फिर जिसको मुश्किल लगे तो बार बार मैं कह रही हूँ बेटा टेंशन बिल्कुल मत लो। मेरे बच्चे टेंशन ले ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मैंने खुद बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट्स को समझा था जब मैं छोटी थी, तो मुझे पता है कि आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। और इतना तो समझ आ ही सकता है कि 1 + x to the power n is 1 + nx, कब? जब x बहुत छोटा हो 1 से। अब इसको हम जब यूज़ करेंगे तब तुम देखना कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग वेक्टर्स शुरू करेंगे। ये अपने आप में बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल सीधे आते हैं वेक्टर्स से। और वेक्टर हमें सपोर्ट भी करता है जब हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन करेंगे, या रिलेटिव मोशन करेंगे, या प्रोजेक्टाइल करेंगे, मतलब थ्रू आउट द फिजिक्स हमको काम आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक ठीक से पढ़ो, इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल करो, ऊंचे सपने देखो और उन्हें सच करो।